Good morning, all of you. Good morning, all of you. Jai Jagannath. Today is 19th July, and we'll discuss national and international news related to 19th July. I hope audio and video both are working fine. Those who are online, please confirm and please share this video with your friends as well so that we can start. Okay, so let's start. Pahalgam attack, Justice Varma, National Green Tribunal, POSH Act, Jungle Safari, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, Inequality in India, Digital Arrest, and Nistar. Okay, so these are news. So let's start. Pahalgam attack, US adds TRF to terror list for Pahalgam attack. The Resistance Front declared a foreign terrorist organization and specially designated global terrorist. External Affairs Minister calls it an affirmation of India-US counter-terror cooperation. So देखिए terror trail, the US designation follows India's global campaign against the cross-border terrorism. तो खास करके अप्रैल 22 रे जो पहलगाम अटैक ହେଇଥିଲା, that means US has recognized that India is the victim of terrorism, and खास करके ये जो the resistant front TRF, I mean the organization who claimed that its involvement in the terrorist attack in the Pahalgam, the US ताको recognize करूची. That means it's a kind of a milestone for India as far as India's fight against terrorism at the global level, because India तो recognize करिथिला that this TRF is a terrorist organization. Now US has recognized it. That means that the US recognize करूची माने it has its own significance, because the alliance of US, जो माने US को follow करूचने, and खास करके Western countries, now they will start recognizing this TRF as a terrorist organization, which will give the boost the confidence of India with respect to terrorist or fight against terrorism. Plus India-US cooperation, Ravi, it's a kind of achievement. Following Operation Sindoor, the Indian government sent a technical team with a comprehensive dossier on the resistant front to Newark for the presentation. So, I mean, a group of MPs, they have started visiting all over the country, all over the globe, to convince that India is the victim of terrorism. So unitedly, we need to condemn this attack, and unitedly, we need to proceed against any such terrorist activities. So this is one type of India's raw जो favor India's raw in support in terms of diplomacy जदि अपन कोई परिवे, and diplomatically it's a victory for India. The evidence was presented to the 1267 sanction committees that decides on global listing of terrorist group. India had designated the TRF as a terror outfit under UAPA, जो Unlawful Activities Prevention Act in January 2023. Okay, so this is what this thing. এবং ଆଗରୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ जो ଆପଣଙ୍କର Masood Azhar. Okay, Masood Azhar ko bhi India was consistently trying to designate or to announce as a terrorist by other countries, खास करके in UN forum. So finally US also recognized that, or UN also recognized that कि Masood Azhar is a terrorist. तो यार implications कौन, significance यदि अपन देखिए, if one organization, one individual would be considered as a terrorist throughout the or across the globe or across the country, its significance or implication is जो funding होची, finance होची, से गुड़िको कम करा जाई परिबो, that can be curbed, and those countries are supporting, obviously they will be under scrutiny of जोटा अपन करो financial action task force अछि FATF, जो जे decide करिबो which country will be under scrutiny under the grey list and which country under the black list, जो हमें discuss करिचे FATF को नहीं. Okay, so this is what the implication for India. So increased international pressure on Pakistan to act against terror proxies operating from its soil. So it will definitely help India or pressurize on Pakistan to act against terror.
boost India's diplomatic stance, and signals continuity in US policy for targeting terror groups that threatens Indian security. Okay, कारण इंडिया रो गोटे टार्गेट होची कोन that at least at the global level India can raise this voice that India is the victim of terrorism. That is the key with respect to India's diplomacy. Moving to the next, Justice Varma. Judge challenges Supreme Court probe ex CJI's action in CAS case. तो बेसिकली हमें देखिए कौन ना जस्टिस वर्मा को केस रे जो कैश फॉर प्रूफ यानी कि when his squatter caught the fire, तो obviously जो फायर ऑफिशियल्स माने ऐसे थे they got cash, I think 10 crores of cash. तो से 10 crores of cash, and then there was an inquiry by the Supreme Court. कारण प्रथमे से माने internal inquiry कले, and in that internal inquiry they found involvement of this Justice Varma. So the case has a substantial what you call background or substantial facts, and then since monsoon session is coming of parliament, so there is a possibility one motion will be passed जोटा कि to remove this judge, जोटा कि हमें impeachment procedure बोली को यानी कि removal of the judges. कारण till now there is no single judge has been removed by the parliament. This is number one. Number two, first Justice Varma was asked to resign because जो inquiry committee report दी थी his involvement in that case for proof, so it has substantial evidence, so it was decided let him ask to resign, but he denied for the resignation. Now motion would be there under article 124 and 218 हमें जानी चाहिए constitution that removal of the judges plus judges inquiry act जो अच्छे अपन करो 1968, under that also judges will be removed for the misconduct and all. So let's see. Background is sitting High Court judge has filed petition challenging the Supreme Court's proof into an alleged case for judgment scandal. That means ये निजे जज कौन करचंदी चैलेंज करचंदी काको सुप्रीम कोर्ट रो जो इंक्वायरी करा जाइथला, it has been challenged by the judge himself. The case involves accusation that judicial officer accepted money in exchange for favorable orders in certain cases. तेणु जो कैश जो देखा मिलता क्वार्टर रे, सो ओबियसली इफ ए जज इज हैविंग 10 crores ऑफ कैश, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स को गोटे पर्टिकुलर केस रे से कहा को फेवर करे, सो अगेंस्ट दैट दिस रिवार्ड हैज बीन गिवन. द प्रूफ वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुज रोल इज नाउ बीइंग क्वेश्चन बाय द पिटिशनर. से कहले दिस जो इंक्वायरी करा जाइथला ये करा जाइथला एक्स सीजेआई के टाइम रे जे जस्टिस खन्ना थिले. Allegation by the judge argues that Supreme Court inquiry violated judicial independence and procedural norms, claims that the proof was launched without the due process and was arbitrary. Okay, so without due process and arbitrary, that means tanko kahiba katha hochi when any inquiry was conducted, Justice Varma was not taken into confidence or he was not given any chance to prove or to explain his kind of argument. Actually जोटा हमें कहूँ कौन ना principle of natural justice. What is this principle of natural justice? Principle of natural justice says if someone is guilty, let him or her explain his or her opinion or point of view. कारण हमें समझ जमती कोर्ट रे हमें कौन करूचे हमें पक्ष एवं विपक्ष जो दुई जन जाक अच्छी जहाँ पर एलिगेशन लगी यानी कि एक्यूज्ड एंड विक्टिम दुई जन जाक आम कोर्ट रे डाकिकी सेमानकर कौन करूचे ओपिनियन नौचे व्यू पॉइंट नौचे एंड एडवोकेट वुड बी देयर. तो ये हूँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रोसेस. तेणु ये जज का कहवा कथा हूँ यूनिलैटरली जुडिशियरी हैज इनिशिएटेड दिस प्रोसेस एंड दिस जस्टिस वर्मा वाज नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड ही वाज नॉट asked to give his own statement. Also raises concern about the surveillance, citing possible phone tapping and unauthorized scrutiny. So could be a possibility तांकर कॉल रिकॉर्ड्स को टैप करा जाइथिबो, could be a possibility तांको ऊपर सर्वेलेंस रखा जाइथिबो, could be a possibility तांकर पास्ट रो जजमेंट्स को नेकी एनालाइज करा जाइथिबो. सो सेति ପାଇଁ कुआ जाउची इट ए कंसर्न ओवर द सर्वेलेंस ऑफ दिस जस्टिस वर्मा. की कंसर्न देखो breach of principle natural justice, no formal complaint or hearing before the proof. तेणु जो करा जाइथिला complaint committee inquiry कला जो internal committee जोटा, so there is no such hearing or such
एवं जस्टिस वर्मा को कौन सी प्रकार निजर एक्सप्लेनेशन दबा चांस दिया जाए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चनिंग अच्छा से कौन कहते ना जो एक सीजेआई इन्वॉल्व थे देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि जजेस मान भीतर भी तो कन्फ्लिक्ट होता ही पारे तेणु जो जजेस को एक सीजेआई थिले या जो माने इंटरनल कंप्लेनिंग कमिटी रे थिले मेंबर होता ही पारे सेमान को भीतर कि जज थिबो जी की जस्टिस वर्मांकर ओपोनेंट ही थिबो एंड ड्यू टू पर्सनल वेंडाटा पर्सनल ग्रजेस से एभली एविडेंस दे थाई पारे judicial independence at risk if judges are investigated without proper process it sets a dangerous precedent तामाने किहे भी आनी की कंप्लेन गोटे करि परिबो एंड प्लस आपनकर गोटे कमिटी फॉर्म हबो एंड इंक्वायरी करिवो लार्जर इंप्लिकेशन कोन होई पारे raises sensitive issues of internal judicial accountability versus independence of judges अच्छा ये जो इंटरनल प्रोसेस कहीं की रखा जाए बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी यदि एक्सटर्नल कमिटी फॉर्म करा फॉर द इंक्वायरी ऑब्वियसली इट वायोलेट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी दैट मीन्स जुडिशियरी इज कमिंग अंडर ए पर्टिकुलर कमिटी और पर्टिकुलर अथॉरिटी यू कैन से तेणु इंडिपेंडेंस को ही मेंटेन करने यू हैव दिस इंटरनल कमिटी हु विल इंक्वायरी और द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से ही करिवो तेणु within that preliminary inquiry component भी ସେମାନେ question raise କରୁଛନ୍ତି कि this is something questionable on the independence of judiciary so internal judicial accountability and independence of judges that means it shows ଆମ कंट्री जुडिशियरी रो अकाउंटेबिलिटी नहीं कारण किसी प्रोसेस ही नहीं जमते हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव बॉडी को कौन कहूचे दे आर कलेक्टिवली रिस्पांसिबल अंडर आर्टिकल 75 टू द लोकसभा ओके सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होचंदी स्विम एंड सिंग टुगेदर जोटा हमें कहूचे दैट मीन्स वन मिनिस्टर पार्लियामेंट किसी रिप्लाई करुछन माने इट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करुछन माने इट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बट देयर इज नो सच जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन आवर सिस्टम this shows what one lacuna or you can say the lack of judicial accountability in Indian judiciary could lead to renewed calls for an independent judicial oversight mechanism. Renewed calls for independent judicial oversight mechanism in the sense हेता ही पारे कि पुणी थरे अपन करो renewed calls for an independent माने independent judicial system को केमती prevail करा जाई पारिबो there could be a possibility कि पुणी थरे ताकू आमे reinstate करिवा पई चेष्टा करि पारु sparks debate over how higher judiciary handles corruption allegation internally तेणु बारंबार से जिनस को कहा जाउची बारंबार एथि पई कहा जाउची कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कोठी ना कोठी हमर एब्सेंस अछि हम सिस्टम रे नेक्स्ट को जिबा एनजीटी को नेकी gaps in MCD's plan to clear गाजीपुर dump by 2028 एनजीटी अच्छा एठी हमर एनजीटी होची मुख्य नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आपनकर सिलेबस जीएस 2 रे अछि कोन ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सो एनजीटी होची आपनकर कोन गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी देखिबा NGT is a specialized judicial body established to handle cases related to environmental protection and conservation of forest and natural resources. तेणु conservation of forest and natural resources खास करके related to environmental protection related जदि किसी cases अछि ताकू fast track basis रे कौन करिबा handle करिबा एवं finalize करिबा. Establishment as per the NGT Act 2010 as per the NGT Act 2010 so since this has been constituted through an act it's a statutory body केबिटू फॉर्म करा इतला 18 October 2010 headquarter was New Delhi and they have other branches as well Bhopal Pune Kolkata and Chennai jurisdiction the first one is the original jurisdiction adjudicates and disputes arising under environmental laws Environmental Protection Act 1986 okay आपनकर एयर पोल्यूशन जो एक्ट आपनकर अछि किबा वाटर पोल्यूशन आपनकर अछि या एनी सच रिलेटेड वाइल्ड लाइफ एक्ट भी अछि एनी सच रिलेटेड टू एक्ट जदि किछि से भली डिस्प्यूट अराइज हुए तबे डेफिनेटली एनजीटी वुड बी देयर जे कि एडजुडिकेट करबो यानी कि से केस को हैंडल करबो या तारो जजमेंट दबो अपीलेट जुरिस्डिक्शन हियर्स अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट्स स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज सपोज गोटे सेशन कोर्ट रे किछि सेमती हेई पारे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे सेमती किछि हेई पारे तो से ऊपर भी एनजीटी कोन करिवो ना निजर जजमेंट दी परिवो एप्लीकेबल लॉज
फोर्थ देखो वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अपन देखिए एनजीटी जमती इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को लेकिन काफी एनजीटी इज क्वाइट सेंसिटिव कि इसी जेड को वायोलेट करा जाउची इन मेनी सच प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इट्स ए थ्रेट टू आपण कोई परिबे कोन एनवायरमेंटल जो वाइल्ड लाइफ आपनकर अछि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अछि। ओके नेक्स्ट देखिबा कंपोजिशन। कंपोजिशन की की अछंती कंपोजिशन फर्स्ट होउछन चेयरपर्सन की ही परंती रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। तेणु सुप्रीम कोर्ट रो गोटे रिटायर्ड जज ही परंती एवं हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस से ही परंती। ओके सेकंड देखो जुडिशियल मेंबर रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तेणु जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जने रिटायर्ड जजेस भी ही परंती। एक्सपर्ट मेंबर कहा ऊपर जे एनवायरमेंटल लॉ ऊपर जहारो एक्सपर्टीज अछि। ओके एनवायरमेंटल साइंस ऊपर जहारो एक्सपर्टीज अछि। ओके फीचर्स not bound by CPC civil procedure code but guided by the principle of natural justice। ये बहुत समय ये स्टेटमेंट ही क्वेश्चन रे पचरा जाए। इट्स नॉट बाउंड बाय द CVC civil procedure code but guided by the principle of natural justice। okay principle of natural justice। सेकेंड देखिए फास्ट ट्रैक डिस्पोजल aims to resolve cases within 6 months 6 मास भितरे से केसेस गुडी को डिसॉल्व करबा को चेष्टा करे। ओके 6 मास भितरे से केसेस को डिसॉल्व करबा को चेष्टा करे। सेकंड होची कोन द डिसीजन ऑफ एनजीटी आर बाइंडिंग अपील्स lie with the supreme court within 90 days। सपोज गोटे गवर्नमेंट तारो एनजीटी रो को गोटे ऑर्डर को नै कि से नॉट हैप्पी। ओके सो यू थिंक इट नीड्स व्हाट फर्दर या ऊपर डिस्कशन होगा दरकार। सो यू आर नॉट हैप्पी विद द एनजीटी ऑर्डर सो आपण सुप्रीम कोर्ट को भी जाई परिबे। ओके ठीक अछि 90 डेज भीतर। सिग्निफिकेंस कोन स्पीडी रिड्रेसल ऑफ एनवायरमेंटल ग्रीवांसेस तो फास्टर कारण आपण यदि नॉर्मल कोर्ट को जिवे ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम एंड प्लस सेमान को पाखरे एक्सपर्टीज न थाई पारे। तेणु जजेस जो माने थिबे जो मानकर बैकग्राउंड थिबो एनवायरमेंटल लॉ सेही टाइप रो बेंच को ही रेफर करबा को पड़िबो। तेणु बेस्ट पार्ट होची इट्स अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी सो इट विल डेफिनेटली स्पीडी द प्रोसेस और फास्टर द प्रोसेस। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज कारण एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्सपर्टीज माने अछन एनफोर्सेस पोल्यूटर पेज एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। ओके एंड प्रमोट्स एनवायरमेंटल जस्टिस। तेणु क्या फाइन इम्पोज करा जाऊ किंबा जमती कह जाए कहार लॉसेस हो एनवायरमेंटल ताको कंपेनसेशन दबा ये सब जिनस। क्रिटिसिज्म देखिबा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कैन नॉट हियर केसेस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ओके तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉरेस्ट एक्ट जो आपनकर अछि 2006 ता अंडर कोनोसी केसेस से सुनी पारिबो नाही। लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर इन सम केसेस एनफोर्समेंट इन जदियो बाइंडिंग करना स्टैट्यूटरी बॉडी बट किसी जगह रे एनफोर्समेंट पावर नाही जदी बाइंडिंग न माने ताकू न मानेला बाइंडिंग तो ऑब्वियसली हमें कहूचे बट सपोज गवर्नमेंट डिड नॉट implement that then what would be the next enforcement agency किछि नाही। वैकेंसीज एंड अंडरस्टाफिंग करना ताकू ह्यूमन रिसोर्सेस रो अभाव रहउची। नो पावर टू टेक सो मोटो कॉग्निजेंस इन द सेंस निजे चाहिले कोनोसी जिनस को पिक करि परिबो नाही या निजे चाहिले कोनोसी केस को पिक करिबो नाही। तेणु ऑब्वियसली गोटे पिटिशनर को सेठी जाई कि पिटिशन को फाइल करबा को पड़ियो यानी कि केसेस को फाइल करबा को पड़ियो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होची आपनकर मु जेमति कहली जे आपण जदि सपोज दुई पक्ष अछन गोटे होचन अक्यूज्ड आ गोटे होचन विक्टिम आपण विक्टिम को सुनि कि अक्यूज्ड अगेंस्ट रे जजमेंट दे देले दिस इज समथिंग यूनिलैटरल दैट मींस आपण violates the principle of natural justice। principle of natural justice होची आपण को as a neutral agency आपण को काम होची victim as accused दुई जन को
आपन को equal importance देबे and you will hear the cases from both the parties and then you will give the judgment. That is the principle of natural justice. Okay. Arbitrary कौन? Arbitrary या arbitrary? Statutory होची जे statute through रे जोटा बना जाता है. Statute. Okay. Legal act जोटा हमें कहूँ. Next, Odisha government races to enforce post after student's death. On July 12, 2025, a 20-year-old B.Ed student at Fakir Mohan Autonomous College, Balasore, self-immolated after alleged sexual harassment by a faculty member. She succumbed to her injuries at AIIMS Bhubaneswar on July 14. The incident sparked widespread outrage and protest across Odisha. Investigations revealed she had reported harassment to former principal 6 months earlier, raising serious concern about institutional inaction. Principal among HOD BMA देखिए. Anyway, government response कौन देखो. Post enforcement measure post होची prevention of जो sexual harassment हमें कहूँ. Odisha Chief Secretary Manoj Ahuja ordered all government departments to ensure sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act 2013 across educational institutions and workplace. So now Chief Secretary has given the order mandatorily to implement this. Measures include mandatory formation of internal complaints committee. So internal complaints committee in the sense say companies ho, organization ho, college हो, any such educational institutions, they must have an internal complaint committee जो जगह अपन कौन करी परिवे अपन का complaint को register करी परिवे. In institution with 10 plus employees, monthly meetings of ICCs for 6 months, then quarterly displays of C-box portal information and awareness and capacity building initiative. जोटी 10 रू अधिका employees होचंदी सेठी ये ICC form करा जीवो सेवनकर monthly review meeting भी conduct करा जीवो. 6 month and then quarterly display of the C-box portal information. What is the C-box portal information? Any such female employee or in institution female student can register their complaint within that box. Awareness and capacity building initiative, awareness among the students, female employees and capacity building in the sense they must have the जेमती आपण कहि परिबे जदि जो इंटरनल कंप्लेनिंग कमिटी अछि it constitutes both आपनकर से इंस्टीट्यूशन रो किछि मेंबर प्लस किछि आउटसाइडर जो माने कि एक्सपर्टीज हैविंग दिस women related issues को नहीं. Institutional heads will be personally accountable. Compliance report must be submitted within 15 days and district administration will conduct inspection for enforcement monitoring. तो 15 दिन भितर आपन को रिपोर्ट सबमिट करिवार अछि whether you have constituted this committee or not, and district administration has been given this responsibility to inspect for enforcement monitoring. So this kind of proactiveness must be there before this incident happened. Implication and significance. This major signal a zero tolerance approach to sexual harassment in educational spaces. Now we can say zero tolerance approach. Ensuring visible helpline, active grievance redressal and frequent awareness engagements aims to rebuild institutional trust. हमें देखिए जो कॉलेज जो सेशन टी स्टार्ट हुए एंटी रैगिंग कमिटी फॉर्म हुए एंड एंटी रैगिंग कमिटी इज क्वाइट एक्टिव ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन कॉलेज सेशन और यूनिवर्सिटी सेशन एंड नोटिस बोर्ड रे आपण देखिबे एंटी रैगिंग हेल्पलाइन एंटी रैगिंग कंप्लेनिंग कमिटी ई सब जिनस देखिबो को मिले. तो सिमिलर काइंड ऑफ फोकस इफ वी गिव द सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस देन this kind of incident could be avoided. Ensuring visible helplines, active grievances redressal and engagement, personal accountability of the heads and district level monitoring underscore the seriousness of enforcement. Then personal accountability of heads यानी कि principal हो या vice chancellor होंतु, they would be held responsible for this action and district level administration भी तंको monitoring करेंगे. If implemented effectively, these reforms may prevent future tragedies and strengthen early intervention mechanism. Obviously, prevention is better than cure. तो सही पाइन हमें complaining committee and such act को implement करिवा को चाहूँ. ये POSH Act origin कोठी आपण देखंतु enacted after the Bisakha guidelines 1997. Bisakha guidelines केबे आसेतिला ना Bisakha versus state of Rajasthan. There was a
case in Supreme Court, and in that case, Visakha guidelines was given in 1997, and 1997 रे Visakha guideline आसला. It's a kind of judicial activism आपण कहि परिबे, कारण ना sexual harassment case रे women मान को protection दवा पाई ये judgment किए देइथला Supreme Court. But now the things was with the Parliament. Parliament had the responsibility to make a law on this Visakha guidelines. ये Visakha guidelines को actually implement केवे करा गला December 9, 2013 after जो निर्भया case in 2012 in Delhi. Okay, निर्भया case पर ही आपण देखिबे ये जो law टी implement करा जाइतला. Fulfills India's internal obligation under Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against the Women. तो जो international convention अछि that elimination of all forms of discrimination against women. Redressal mechanism देखिबा. First होची internal complaining committee. Okay, कोठी सेटा को implement करा जिवो जोठी की equal to 10 or more than 10 employees माने अछंदी. को माने थिबे ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि से कंप्लेनिंग कमिटी रा हेड के होबो ए सीनियर वुमेन एम्प्लॉय 2 or more employees with experience in the social work, a legal knowledge मान कर टिके knowledge थिबा दरकार. 2 more employees, external member भी रहिबे from an NGO or association committed to women cause or any civil society member समाने मध्ये यार पार्ट रहिबे. Second होची local complaints committee at district level for workplaces with less than 10 employees or if the employer is the respondent. Okay, ये district level रे भी आपण देखिबे local complaints committee भी गोटे फॉर्म करा जिवो. Okay, तो ये होची तारो mechanism. Now moving to the next. Jungle safari, work on first phase of jungle safari in the Aravali, so begin soon. Haryana Minister, देखिबा. Haryana Environment, Forest and Wildlife Minister Rao Narveer Singh stated that the first phase of the jungle safari in the Aravali range covering Gurugram and Nuh district is set to begin shortly and aims to complete it within the 2 years. तो Aravali जदि आपण जानिथिबे Aravali होची आपनकर काफी ओल्ड माउंटेन रेंज जेमती हिमालय को आमे कहू यूथ माउंटेन रेंज कारण हिमालय होची इवॉल्विंग. ओके, तार यूथ स्टेज रे अछि. इफ यू सी द Aravali ये काफी इरोडेड है कि काइंड ऑफ ए प्लेट्यू टाइप रो है कि असलानी Aravali एंड Aravali रेंज को जदि आपण देखिबे खास करके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रे अछि. हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली रे किछि अंश ई सब जगह रे आपण को Aravali रेंज देखिबा को मिलिबो. प्रोजेक्ट विषय स्लाइटली देखिबा. Haryana government wants to set up a jungle safari that is 10,000 acres spanning Gurugram and Nuh district intended to become Asia's largest jungle safari. तेणु से माने चाहुंचନ୍ତି कोन Asia's largest jungle safari form करिबा पय. Okay, phase 1 will cover approximately 2,500 acres in selected villages such as Sakatpur, Gairatpur Vas, Sikhopur and Norangpur. Economic and ecological objective देखो expected to revive degraded forest land. तो आपण देखिबे हरियाणा, राजस्थान ए जो दिल्ली एनसीआर रीजन अछि सेठी डेजर्टिफिकेशन गोटे प्रॉब्लम देखिबा को मिलुछि. डेजर्टिफिकेशन रो मेन रीजन कोन थाए? प्रथमे लैंड डिफॉरेस्ट हुए, लैंड डिग्रेडेशन हुए. प्रथमे डिफॉरेस्ट हबो, सॉइल इरोजन हबो, सरफेस सॉइल, देन लैंड डिग्रेडेशन होबो एंड डिग्रेडेशन पर धीरे धीरे कोन हिदिबो से गुडी को डेजर्टिफिकेशन रे कन्वर्ट हुए. दैट मींस नॉट रेडी फॉर कल्टीवेशन और इट लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी. ओके, दिस इज द प्रोसेस. सो दैट इज द रीजन ई जो लैंड डिग्रेडेशन, ई जो लैंड रो सरफेस फर्टाइल मटेरियल एट द सॉइल इरोजन को बंद करबा पई व्हाट वी आर डूइंग आमे डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को रिवाइव करबा पई चेष्टा करूछु. कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी. ओके, एवं आपण देखिबे से जगह रे अच्छा क्वेश्चन मो आपण को पई पचरची ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जगह रे देखिबा को मिले आंसर करिवे कमेंट सेक्शन रे. रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर कहीं के हमें रिचार्ज पॉइंट डिस्कस करूचे ना. इफ यू सी द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया they are suffering from this deficit in the groundwater recharge because of the too much of exploitation under the green revolution, and still they are exploiting this groundwater because your northwestern belt is not you can say
good for rice cultivation or paddy cultivation. Still they are cultivating this paddy by using the groundwater, because rice is a water intensive crop. Okay, provide a habitat for wildlife including leopard and potentially tigers in future phases. Aimed at boosting ecotourism, providing employment to the local youth in hospitality. That means ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ, tourist guide ହେଇପାରିବେ, guiding conservation, ban mitras and related sector. Okay, so these are the benefits we can see. Concern and criticism देखिए, a group of 37 retired Indian Forest Service officers wrote to the Prime Minister raising concern about the ecological fragility, disruption to wildlife corridor, worsening water crisis and potential for commercial exploitation. So environmental activists warn that infrastructure development, tourist influx, ancillary construction may exacerbate habitat degradation and encroachment, undermining the ecological जो आपनकर तार स्ट्रेंथ अच्छी. सो जंगल सफारी को एमाने अपोज करूचंदी काहेकि दैट मीन्स टूरिस्ट एंटर करिवे, सेठी कंस्ट्रक्शन काम हबो, इटसेल्फ जहाँ भी अच्छी से धीरे धीरे आहुरी डिग्रेडेशन हबार भी चांसेस अच्छी. Marks a shift in Haryana's identity, primarily industrial, agricultural to eco-conservation or ecological conservation and tourism focused. Aims to combat desertification. मैं आपको starting रही जिनसे कहूँगी why government is concerned. Government चाहूँगी कि desertification को slow down करिबा पाई, restoring the degraded land, supporting the large Aravali green wall initiative covering 1.1 million hectare across the 4 states by 2027. तेणु गोटे ग्रीन वॉल इनिशिएटिव कहीं ना डेजर्टिफिकेशन आपनकर लेफ्ट साइड रे हमर डेजर्ट अछि राजस्थान जदि आपण देखिबे सेपट साइड तो सेही जागारू जेमति डेजर्टिफिकेशन धीरे धीरे स्प्रेड ही जाउची कारण से एरिया ड्राई लैंड लैंड डिग्रेडेशन लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड फर्दर से गुडी को डेजर्टिफिकेशन ही जाउची. इफ वी हैव दिस ग्रीन वॉल इनिशिएटिव यानी कि जब हमें ग्रीनरी करके रखा तो ऑब्वियसली डेजर्टिफिकेशन कोट ना कोटी स्टॉप हम, इट कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दिस. दिस इज द आइडिया जदि आप ब्रॉडली देखिए. नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना केबे लॉन्च करागला? ये करा जीवो जो आपनकर अक्टोबर रु लॉन्च करा जीवो रबी सीजन. यूनियन बजेट रे एटा को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला. ओके, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, यूनियन कैबिनेट टेन्योर रहिबो 6 इयर्स एंड 24,000 करोड़ एथरे स्पेंड करा जीवो. ओके, डिटेल देखिए. ऑब्जेक्टिव, इंटर एंड इंट्रा स्टेट डिस्पैरिटीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. मोस्टली सी डिस्ट्रिक्ट गुडी को टारगेट करा जीवो जोठी आपनकर प्रोडक्टिविटी इज लो और लो प्रोडक्टिविटी थिबो, खास करके डिस्ट्रिक्ट गुडी करे. Convergence, merging 36 existing schemes and 11 ministries and departments, including PM Kisan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, etc. District focus, based on Niti Aayog's aspirational district model. What is this aspirational district model? Na kichi ame district ko dekhuchu as an aspiration. Aspiration in terms of socio-economic profile, aspiration in terms of empowerment. तो सही टाइप रो जेमती aspirational district model थिला से टाइप रो 100 such low productivity district को हमें फोकस करू जे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना माध्यम रे. District धन धान्य समितिस will identify and converts central and state scheme. सही ते पाइन 36 schemes को ये प्रोजेक्ट अंडर रे मर्ज कर दिया जाउछि. ओके, PPP मॉडल, local public private partnership encourage for एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशन. खास करके आप देखी पारे ये प्राइवेट सेक्टर विल बी इन्वॉल्व. से माने सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिबारे, स्टोरेज जोटा आम कहे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज. ओके, ये सब से माने इन्वेस्ट करेंगे. मॉनिटरिंग सेंटर टू ट्रैक 117 इंडिकेटर्स मंथली, इनपुट्स, आउटकम्स एंड फाइनेंशियल एक्सेट्रा. डिस्ट्रिक्ट प्लान्स, टेलर मेड प्लान्स अलाइंड विद द नेशनल गोल्स. Water and soil conservation, crop diversification, self-reliance in food grains, pulses and oilseeds. Water and soil conservation in the sense, obviously, will give importance to the micro irrigation, soil conservation madhya kara jibo, sustainable way of or sustainable use of
जो फर्टिलाइजर भी देखिबा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस जो मोनोक्रॉपिंग रो जो प्रॉब्लम अछि एंड वी नीड टू डाइवर्सिफाई द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर्स दैट इज द रीजन आमे जो कन्वेंशनल पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर अछि पैडी आ व्हीट सेठु आमे बाहर की कुआड जिबा आमे मिलेट को प्रोडक्शन मध्ये करबा आमे अदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज अछि गोटरी आपनकर फिशिंग आपनकर पोल्ट्री भी अच्छी ये सब जिनसे भी डेयरी सेक्टर को फोकस करा जिवो एंड सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स यदि आपण देखिबे सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ पैडी एंड व्हीट but in case of pulses and oil seeds we are still importing from other countries, so in that case also we are trying to be or to trying to become the self reliance. Concern raised देखिबा decline in the public investment. Parliamentary Standing Committee noted decline in agricultural budget as percentage of central plan outlay. आपण देखंतु 2021-22 रे सेटा थला 3.53 and then 22-23 रे 3.14%, 23-24 रे 2.57, 24-25 2.57 and 25-26 2.51. consistently this is declining. So this is the concern कि rather than merging or rather than merging all those schemes under one umbrella scheme, we need to do what? हमको investment increase करबा को पड़िबो. आउ कोन criticism देखंतु, this raises fear that convergence may become a cost cutting tool. कहीं हमें कन्वर्ट्स करूछु कॉस्ट कटिंग टूल नॉट ए प्रोडक्टिविटी बूस्टर. ये क्रिटिसाइज करा जाउची काहाको ये पर्टिकुलर स्कीम को. ओके पर्टिकुलर स्कीम को सेकेंड कौन करा गला वन साइज फिट्स ऑल चैलेंज. ये वन साइज फिट्स ऑल चैलेंज कौन ना यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन में इग्नोर लोकल एग्रो क्लाइमेटिक नीड्स. जदि हमें कहवा जमती आम प्लानिंग कमिशन को क्रिटिसाइज करूले कि गोटे प्लान आनिले एवं थ्रू आउट द कंट्री ताको इम्प्लीमेंट करागला विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल पीपल और लोकल एरिया. सो ये भी सही टाइप रो क्रिटिसिज्म करा जाउची कि जदि आम गोटे स्कीम आनिबा एंड वी वांट टू इम्प्लीमेंट इन अक्रॉस द कंट्री तो ही पारे लोकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग ही पारे. ओडिशा एग्रो क्लाइमेटिक जोन मे नॉट बी द सेम इन केस ऑफ केरला और तमिलनाडु राइट. तेणु वन साइज फिट ऑल चैलेंज भी गोटे टाइप रही पारे. रिस्क डाइल्यूटिंग स्कीम्स टेलर्ड फॉर वल्नरेबल जियोग्राफीज एग्जांपल ट्राइबल बेल्ट एंड ड्राई जोन्स से जगह को कोनोसी कस्टमाइज्ड स्कीम हमको आनिबा कथा बट हमें ताको गोटे स्कीम अंडर रे रखिछे. Recent Kharif trends sowing of pulses and oil seeds is declining, raising concern about import dependency and nutritional security. तेणु वर्तमान जो खारिफ ट्रेंड्स हमको देखिबा को मिलुची पल्सेस आ ऑयल सीड्स सेते चाष करा जाउ नाही. तेणु जोति पई प्रोडक्शन आपनकर ऑब्वियसली कमिवो देन डिपेंडेंसी विल इंक्रीज. ओके वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशन कोन करा जाउची देखिबा इंक्रीज टोटल पब्लिक एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट. Convergence must add value, not reduce outlay. Okay, तेणु convergence must add value. Converge करो, but it does not mean कि तगरा फंड को कम करो या फंड को या पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर को कम करो. रादर हमको कन्वर्जेंस करके वैल्यू ऐड करिवार अछि. स्ट्रेंथनिंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन करिबा. ओके इम्प्लीमेंटिंग इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स agricultural universities and FPOs farmers producer organization जो leverage domain expertise and grassroots experience. तेणु agriculture universities रे जो researchers professors अछन they need to share their experiences expertise to the farmers. Equity lens special focus on rain-fed areas, women farmer, marginal landholders, transparent monitoring, independent audits plus real time dashboards, accountability. Okay, तेणु ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग भी करने को पड़ो. कौन क्वेश्चन पीएम किसान योजना देखो पीएम किसान योजना तो आपंकर कैश ट्रांसफर सिंपली आउ से किसी करा जाऊनी बट दिस पर्टिकुलर स्कीम प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना से माने डिटेल जदि देखिबे डिटेल वर्तमान सुधा कोनोसी मटेरियलाइज करा जाई नाही. दे हैव सिंपली प्लान कि द ओनली वन स्कीम विल बी देयर बाय मर्जिंग ऑल दोस 36 सच स्कीम्स. तो डिटेल से माने तळे आसीबे तो आपण सेट देखिबे बट सेमान को कहबा कथा होची ओवरऑल हमें 100 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करबा जो जगह प्रोडक्टिविटी लो अच्छे
এবং সেই জায়গায় ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଲ୍ପ ଦେଉଛନ୍ତି ମେ ବି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ହେଲ୍ପ ଦେଇପାରନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍ତି ସବସିଡ଼ିଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ସିଡ୍ସରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ये सब obviously once it will be implemented then we can see कि କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଟା different from the old such schemes. Okay, moving to the next, inequality in India. World Bank जो claim करूची inequality को नहीं, reality कौन होचे? This is the main theme of the article. Indian inequality and the World Bank's claim. Indian inequality reality रे कौन होची and World Bank कौन claim करूची? This is the difference. Income inequality has declined in India in recent years. Okay, ये की कहूची World Bank कहूची कि declined in India. Gini coefficient measure of income inequality has improved. Gini coefficient कौन होची? Gini coefficient अपन करो increase है. Gini coefficient कहला में कौन बुझो? Okay. देखो ये हूँ 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन ये जो लाइन टी अच्छी एटा को हमें कहूचे लाइन ऑफ इक्वालिटी ओके एंड दिस कर्व इज नोन एज द लॉरेंज कर्व ओके ये हूँ लॉरेंज कर्व ये हूँ लाइन ऑफ इक्वालिटी अच्छा ये कौन ताकू यार यूज केमती करा जाए देखो if this Lorentz curve is coming closer to line of equality, that means equality is increasing, inequality is reducing. This is the explanation. Let me repeat this. यदि ये जो Lorentz curve टी अच्छी, ये जो Lorentz curve टी अच्छी, if it is coming closer to the line of equality 45 degree, तबे सेटा को हमें कहबा equality is increasing. If it is moving away from the line of equality, this is 45 degree line, तेणु ताका हमें कहबा inequality is increasing. तबे ये Gini coefficient कौन? Gini coefficient होची this area, you suppose A, and then this area total. तमाने एटा को धरन तो B, A divided by A plus B. ये होची value of Gini coefficient. ओके एवं से वैल्यू वैरीज करे 0 to 1 ओके 0 to 1 तेणु सी कहूँ Gini coefficient has improved means that means inequality has declined inequality हमरा कमीची ओके ये वर्ल्ड बैंक क्लेम करूची poverty in India has declined significantly between 11 and 20 extreme poverty fell below 10% extreme poverty जोटा अछि से फेल बिलो 10% 10% रो कमी ग्रोथ हैज बीन प्रो पुअर यानी कि बॉटम 40% एक्सपीरियंस्ड हायर इनकम ग्रोथ और सिंपली यू कुड से इंक्लूसिव ग्रोथ हमें ताको कहि परिबा ये होची वर्ल्ड बैंक रो क्लेम रिगार्डिंग द इंडियाज इनइक्वालिटी ओके काउंटर आर्गुमेंट्स देखिबा कि एक्चुअली रियलिटी रे कोन होची इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे सो राइजिंग वेल्थ इनइक्वालिटी and asset concentration. So wealth inequality, asset concentration in the sense जो group of capitalists हमारे होचंदी हमारे countries रे group of capitalists they have higher wealth or assets than those bottom percentage of the people. Okay, तेणु wealth inequality बढ़ी ची केमती ना wealth concentration बढ़ी ची with the few top percentage of the population. PLFS and CMIE देखो indicate stagnation in the rural wages and rising joblessness. Rural wages रे stagnation यानी कि rural wages constant होची बढ़ुनी. In fact, आपण देखिए मैं आपण को दी दिन तले एक example देइथिले. If you see the automobile industry खास करके 4-wheeler category जो देखिबे entry level car रो consumption significantly reduced. एक गोटे implication आपण या interpretation आपण करि परंदी that people have stopped buying this entry level car, they have started purchasing the higher end car गुडिको higher end vehicles. So that is not the case. केस होची कोन जो एंट्री लेवल कार गुडिको जो कंज्यूमर किणुथला से कंज्यूमर पाखरे आजि सतिके बाइंग कैपेसिटी नाही. So neither the entry level car nor the higher level car they cannot purchase or afford a particular car because of the stagnation in terms of the income and increasing the expenses due to high consistent of inflation. कारण लास्ट दुईटा क्वार्टर रे हमें देखिछे
Inflation has been declined or in moderate, जो कि RBI has cut down the rate. But ता पूर्वरु if you see कि consistently inflation was more than the 6%, जोटा आपनकर category थिला 2 to 6%, से 6% रो अधिका consistently रहुतला, जो कि से मैंने afford करि पारु नथले. Piketty and Chancel's work, Piketty हुजन Thomas Piketty, जी की Nobel Peace Prize मिलथिला, and he actually highlighted the inequality across the globe and इंडिया इनइक्वालिटी विषय से डिस्कस करथिले. एबे रिसेंटली गोटे आर्टिकल पिकेटी थॉमस पिकेटी लिखिथिले कोन ना करंट इनइक्वालिटी इन इंडिया समथिंग हायर दैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा. ओके, टॉप 1% इन इंडिया कैप्चर 22 to 25% of the national income, wealth highly concentrated. If you see the Global Inequality Lab 2023 report, India among the most unequal countries with inequality rising post 2014. 2014 ପରେ ଆପଣଙ୍କର significantly inequality ବଢିଛି. Core issues with the World Bank's methodology. Data gap. India has not released the consumption expenditure survey since 2011-12. Consumption expenditure survey in the sense ଲୋକଙ୍କର consumption को category ରେ କେତେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, consumption basket. ओके, से केस रे आमे वर्तमान सुधा डेटा कलेक्ट करिना हूं आफ्टर 11 and 12. 11-12 रे सी रंगराजन कमिटी गोटे फॉर्म करा जाइथिला टू एग्जामिन द पॉवर्टी रिपोर्ट ऑफ द आपण कहि परिबे तेंदुलकर कमिटी रो, जोटा कि आपनकर 2009-10 रे आसिथिला. अंडर रिपोर्टिंग बाय रिच हाउसहोल्ड लीड्स टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल इनइक्वालिटी. ओके, अंडर रिपोर्टिंग बाय द रिच हाउसहोल्ड रो एक्चुअली असेट या वेल्थ रो सठिक रिपोर्टिंग हो नहीं. करेक्ट. ओवर रिलायंस ऑन द averages hides disparities within the states, caste and rural urban divide. यानी ओवर रिलायंस एंड एवरेज आमे डिस्पैरिटी को हाइड करूछु, रादर आमे देखुछु कोन एवरेज केते इंक्रीज हेछि. बट इनी जदि आपण कंपेयर करिवे, कंपैरिजन को आमे करूने, वी आर सिंपली लुकिंग इनटू द एवरेज डेटा. एवरेज देखिबे तो बढ़ी कहीं एवरेज बढ़ो कारण टॉप रे जो मैंने अच्छा से इनक्रीज होउची तो एवरेज भी आपनकर इनक्रीज होबो. बट जदि कंपेयर करिवे हायर इनकम ग्रुप लोअर इनकम ग्रुप, यू विल फाइंड द डिफरेंस. एक्सक्लूजन ऑफ वेल्थ मैट्रिक्स फोकसेस मोस्टली ऑन इनकम नॉट असेट्स और लैंड. ओके, तेणु ये होची किछि प्रॉब्लम जोटा कि वर्ल्ड बैंक रा मेथोडोलॉजी रे अछि, जोथि पई कि से कंसिस्टेंटली कहउचंदी कि इंडिया रा इनइक्वालिटी कमी छी. इनइक्वालिटी डेटा. एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट राइजिंग ड्यू टू गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी गैप्स. Employment, CMIE data shows higher youth unemployment 15 to 20%. Health access, NFHS 5, wide disparities in the maternal and child health across states. Wealth, RBI data and Oxfam report, top 10% own 77% of the wealth in India. ये होची सबुठु बड़ आयरनी कि टॉप 10% केते कैरी करछन वेल्थ 77%. कंजप्शन, रियल वेजेस एंड रूरल डिमांड have not recovered fully post covid ପରେ ଯେତିକି बिफोर कोविड जो कंजप्शन थिला से वर्तमान सुधा इंक्रीज हेई नाही या रिस्टोर करी नाही. डिजिटल अरेस्ट देखिबा. 9 get life imprisonment of digital arrest for fraud. A digital arrest is a cyber crime scam where fraudsters impersonate police, CBI, Narcotics Control Bureau or even Interpol official through video calls or WhatsApp messages, threatening the victim with immediate arrest unless a security deposit or a verification fee is paid. आपन को से कहबो मु होची सीबीआई रो, तनो इमीडिएट मते एति की पैसा न देले मु अरेस्ट करि देबे. ओके. भारतीय न्याय संहिता used for fraud, criminal intimidation and impersonation, legal action निया जाई परिबो. IT Act 66C, 66D for identity theft, cheating by the impersonation in July 2025. Kalyani Court, West Bengal gave life imprisonment to 9 accused in India's first digital arrest fraud conviction. Okay, digital arrest को नेकी क्वेश्चन आसी पारे, what is digital arrest? So मनकर modus operandi देखंतु, initial contact, victim receive a call often from a spoofed or international number by a WhatsApp with police officer's photo as a profile. Police officer profile pic थिवो.
told they are involved in a crime like sending illegal parcels, money laundering and drug trafficking, threat or arrest in form of a non-bailable warrant or digital custody. Okay, এবং পয়সা নেই কি ছুমন্তর fake legal document भी थिबो, so fabrication FIRs, court notices, ID cards via video or PDF, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଇନଭଲ୍ଭ ବି ଅଛନ୍ତି ନା କ୍ରାଇମରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଗିବନି କି ମୁଁ କରିନି ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଇଏ ଜାଣିଲା କେମିତି. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଇରନି ଇନ୍ ଆୱାର ସୋସାଇଟି. Payment demands. Victim is coerced to transfer money via UPI, Paytm, crypto, foreign remittances. Digital surveillance. In some cases, victims are told to remain at home and share video location daily, creating a sense of confinement. Okay. Nistar, first indigenous driving support vessel commissioned into Navy. 18 July 2025, Visakhapatnam Naval Dockyard, Ministry of Defence, Sanjay Seta को inaugurate करिचंदी. Admiral Dinesh K. Tripathi. India joins an elite curve of nations capable of building, operating deep sea rescue vessels, marking a major stride towards maritime self-reliance. Okay. कहा द्वारा बिल्ड कराई थी हिंदुस्तान सीपैड लिमिटेड, मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, delivered 8 July with 75 to 80% indigenous content. Okay, 120 MSMEs मिसिकेटो को बनीचंदी. First of two vessel, both launched in September 2022. Capabilities देखिए, length होची 118 to 120, 10,000 ton displacement, saturation diving up to 300 meter, side diving stays up to 75 meter, equipped with DSRV mothership. Remote system जो देखिए, remotely operated vehicles capable of operation up to 1000 meter depth. Okay, so in the dynamic positioning system maintains precise station during underwater operation, support infrastructure, 8-bed hospital, OT, ICU, decompression chambers, hyperbaric medical facility, helideck यानी कि helicopter operation भी करा जाई परिबो. Okay, 60 days at sea without resupply, तो सेतिकी एमानको पाखरे endurance अछि यानी कि capacity अछि. Armament to AK-630 30 mm CIWS, closed-in weapon system for self-defense. So this is the capacity. Odisha related देखिबा, National Conference and Governance in Bhubaneswar, 400 plus delegates from central and state government gathered Lok Sabha Bhavan for 2-day conference jointly organized by Department of Administrative Reform, Public Grievance, Odisha government to showcase best practices, inauguration by the Mohan Maji and Jitendra Singh. Okay, तो एटा आपनकर गुड गवर्नेंस ऊपर कॉन्फ्रेंस टी करा जाइतला. विकसित भारत 2047 एंड 2036 भी हमरो ओडिसा रे भी टार्गेट अछि. नेक्स्ट देखिबा स्वच्छ सर्वेक्षण जो आपनकर 3 to 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी रे भुवनेश्वर होची 5th पोजीशन ने आपनकर अछि. अचीव 9th पोजीशन नेशनली अमंग सिटीज. ओके, 9th पोजीशन रे, 9th पोजीशन नेशनली, क्लाइंबिंग अप टू 34 लास्ट ईयर. ओके, प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ ओडिशा. राइट, राउरकेला देखो 15th, कटक 30th, बरहमपुर 75th की अवार्ड देइछन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. नेक्स्ट देखिबा, इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि 1 पृथ्वी 2, अग्नि 1 न्यूक्लियर केपेबल, अग्नि 1 पृथ्वी 2 नाइट टाइम टेस्ट करा जाइछे बैक टू बैक. कोठी व्हीलर आइलैंड जोटा एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड. अग्नि 1 हैज रेंज ऑफ 700-900 किलोमीटर, पेलोड कैपेसिटी 1000 kg, capable of both nuclear and conventional short range ballistic missile. Okay, first inducted in 2003. So say जिनसे DRDO. Okay, semiconductor policy को amend करा जाइछी. Odisha cabinet approved the amendments. Semiconductor manufacturing fabulous policy. 16 key changes. First project packages, enhanced PLI, relocation support and incentive for park developers. Aligned incentives with Odisha IPR 2022. Okay, ये होची जिनसे. ओके, किसी एमसीक्यूज देखिनवा. फर्स्ट एमसीक्यूज रा आंसर करंदु. आंसर कोन बेटा 213 हबो. ओके, 213 हबो. फर्स्ट स्टेटमेंट अछि जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नाही. नेक्स्ट देखंदु 1 and 3 of it. The rankings are released annually by the Ministry of Jal Shakti under the Namami Gange project. It is kahadura kara jay Ministry of Housing Affairs, Housing and Urban Affairs. Next, missile capabilities.
1 and 3 हम पृथ्वी 2 has a long range than अग्नि 1 से कहूची तो एटा होची अग्नि 1 has a long range 700 900 पृथ्वी होची 350 फोर्थ 1 and 2 एटा होची अपन को 1 and 2 the policy completely removes the role of any state level apex committee in project approval so it's not completely remove okay chief secretary would be the head of that committee state level रो committee रहिबो ये होची एसए क्वेश्चन अपन करो essay question India at 75 striving for equality in an unequal democracy okay ठीक अछि आरंभ 6.0 21st ରୁ स्टार्ट होची एंड ये होची परिपूर्णा जेएन लाइव कोड यूज करिवे टेलीग्राम आपन को पीडीएफ रे मिल जो फेसबुक इंस्टा रे फॉलो करि परिवे ठीक अछि थैंक यू वेरी मच